हेलो बच्चों लास्ट टाइम ਆਪਾਂ ਸੈਟਸ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਉਹਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਬੇਟਾ ਹਨਾ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छे तरीके ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। ਓਕੇ अब बेटा एजुकेयर ऐप ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਸੈਂਪਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ x is a positive integer x ਕੀ ਹੈ positive integer and a divisor of 9 देखो ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ देखो पॉजिटिव इंटीजर है और डिवाइजर ऑफ 9 मतलब 9 ਨੂੰ डिवाइड करते हो 1 3 भी डिवाइड करता बेटा 9 ਨੂੰ है ना ਤੇ 9 भी डिवाइड करता 9 ਨੂੰ ਤੇ पॉजिटिव इंटीजर्स ਲੈਣੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਣ ਗਈ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ। ठीक है बेटा थर्ड क्वेश्चन है x equals to n over n square plus 1 n less than 7 n belongs to natural number n less than 7 बेटा 7 होना चाहिए 7 तो लेस देन और नेचुरल नंबर होना चाहिए। आप सारे नेचुरल नंबर फिल कर देते हैं। पहला 1 फिल करते हैं आ बन गया फिर 2 फिल करते हैं बेटा आ बन गया फिर 1 आना है हर बार 1 फिर 3 फिल करते हैं बेटा आ बन गया अपने को फिर 4 फिर 5 फिर आप फिल करांगे 6 फिर आप 7 फिल नहीं करना क्योंकि लेस देन है। ठीक है इनू सॉल्व करोगे 1/2 इनू सॉल्व करोगे 5 इनू सॉल्व करोगे 10 इनू सॉल्व करोगे 15 इनू सॉल्व करोगे 26 इनू सॉल्व करोगे 37। ठीक है बेटा आ की बन गया सी सेट रोस्टर फॉर्म। दिस इज अ सेट बिल्डर फॉर्म एंड दिस इज रोस्टर फॉर्म। ओके बेटा नेक्स्ट चलते हैं डी सेट x is a vowel in English। vowel एलिमेंट केड़े होंगे बेटा a e i o u है ना बच्चों। आ बन गया रोस्टर फॉर्म एंड दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। एक सेट दे रखे हैं 1 4 9 16 25 36 49। देखो बेटा ये की बनया 1 दा स्क्वायर 2 दा स्क्वायर 3 दा स्क्वायर 4 दा स्क्वायर 5 दा स्क्वायर 6 दा स्क्वायर 36 7 दा स्क्वायर 49। ठीक है ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਗਏ n ਸਕੁਅਰ where n is a natural number and n is less than 8 ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ n less than equals to 7 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ठीक है 8 ਤੋਂ ਛੋਟਾ 7 ਹੀ ਆਊਗਾ ਨਾ n less than equals to 7 लिख लो चाहे n less than 8 लिख लो। ठीक है बच्चों ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8। बेटा इन्हों आप किवें लिख सकते हैं D is the set containing elements like this 1/n where n is a natural number and n lies between 1 and 9। 9 तो छोटा ते 1 तो बड़ा 1 नहीं है ना नीचे 2 तो स्टार्ट हो रहे हैं इस करके आप n ग्रेटर देन 1 लिखे 9 तो छोटा मतलब 8 तक आ रहे हैं। ठीक है बेटा ये होगी यदि सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट है बेटा सी सेट 5 25 125 625 3125। आ देखो ये की बन रहे हैं 5 दी 5 रेज़ टू पावर 1 5 ਹੁੰਦਾ 5 रेज़ टू पावर 2 25 5 रेज़ टू पावर 3 125 5 रेज़ टू पावर 4 625
5 raised to power 1 5, 5 raised to power 2 25, 5 raised to power 3 125, 5 raised to power 4 625, 5 raised to power 5 3125. तो की बन गया बेटा 5 की पावर n, where n belongs to natural number and n is less than 6, या आप एवं भी लिख सकते हैं n less than equals to 5। ठीक है बेटा, ये सी सेट हो गया। नेक्स्ट है डी। डी दे रखे बेटा अपन ਨੂੰ ਇਦਾਂ 2 4 6 8 10। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੋਗੇ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਇਹ 2n, where n belongs to natural number। देखो बेटा ये खत्म नहीं हो रहे हैं, इनफाइनाइट सेट है, तो ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ हैं 2n, 2 into 1 2, 2 into 2 4, 2 into 3 6, 2 into 4 8, 2 into 5 10 up to so। ठीक है बेटा, डेटा ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੈਟਸ ਨੂੰ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 2 to 6 ਨੂੰ x such that x belongs to r real numbers, 2 less than x less than 6। बेटा ओपन इंटरवल है, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। नेक्स्ट चलांगे बेटा -6 to 9 क्लोज इंटरवल। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ x belongs to real numbers, -6 less than equals to x less than equals to 9। नेक्स्ट लिखोगे बेटा 4 10 belongs to x belongs to real numbers, 4 less than equals to x less than 10। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है -3 to 9 belongs to x such that x -3 to 9 is the set containing x is a real number, and -3 less than x less than equals to 9। ठीक है बेटा, ये होगी यदि set builder form and this is roster form। okay, नेक्स्ट बेटा ऑपोजिट है बिल्कुल। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ x belongs to r 3 less than x less than equals to 12। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 3 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ बेटा ਤੇ क्लोज इंटरवल 12 पे। ठीक है बच्चों, नाउ बी सेट x belongs to r -4 less than equals to x less than equals to 10। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੋਗੇ बेटा, देखो इक्वालिटी ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ -4 10। ओके बच्चों, ये अपना थर्ड क्वेश्चन हो गया। सॉरी बेटा, ओके बच्चों ये अपना फोर्थ क्वेश्चन हो गया। ओके बेटा, ਆਪਾਂ थर्ड ਤੇ फोर्थ क्वेश्चन दोनों कर चुके हैं। बेटा ਆਪਾਂ नेक्स्ट क्वेश्चन ਕਰਦੇ ਹਾਂ 6th। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ बेटा ਜਿਹੜਾ 5th क्वेश्चन ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ 6th क्वेश्चन ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। A is the set containing elements 1 2 3 4 5, B is the set containing elements 2 4 5 7 8 9, and C is the set containing elements 1 4 6 7 10, and D is the set containing element 1 2 6 8 12 and 13। ठीक है बेटा, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ A minus B। A minus B बेटा ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ all those elements of A which are not in B। देखो A ਦੇ ਉਹ ਵਾਲੇ एलिमेंट ਜਿਹੜੇ B ਚ ਨਾ ਹੋ, 2 ਹੈਗੇ ਤੇ 4 ਹੈਗੇ, 5 ਵੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1 and 3। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है B minus A, all those elements of B which are not in A, all those elements of B which are not in A। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ बेटा 2 भी है 4 भी है 5 भी है, ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਰਹਿ ਗਏ 7 8 9। नेक्स्ट है D minus A, all those elements of D which are not in A,
1 भी है बेटा, 2 भी है, ठीक है, 6 8 12 एंड 13, 6 8 12 एंड 13, ठीक है बेटा। नेक्स्ट ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ यूनियन वाले बेटा क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, तुसी कर सकते हो। एक अद्धा मैं करके दिखा देनी आ। ए यूनियन बी दे विच बेटा 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 4 5 7 8 9। A union B is the set containing X such that X belongs to A or X belongs to B, ठीक है बेटा, वो आ गया A union B। इसे ना बेटा हुण आपां B union C निकालते हैं। B union C की होगा बच्चे, B union C 1 2 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इस तो बाद बेटा नेक्स्ट ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ A इंटरसेक्शन B union C ਦੀ इंटरसेक्शन ਆਪਾਂ X ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। A ਦੀ इंटरसेक्शन B union C ਦੀ इंटरसेक्शन ਆਪਾਂ A ਨਾਲ करनी है। B union C एंड A कॉमन एलिमेंट्स लिखने बेटा, देखो 1 भी है 2 भी है, ठीक है, 4 है 5 है, 3 नहीं है, बस 1 2 4 5। बेटा आगे चेक करने की ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। क्यों नहीं लोड? क्योंकि 6 7 8 9 10 ਇੱਥੇ नहीं है। इंटरसेक्शन मींस इट शुड बी इन both sets, okay? If it is not in one set then it means it will not be in the intersection of these two sets, okay बच्चों। इस तो बाद बेटा डी मॉर्गन्स लॉ का 7वां क्वेश्चन है जेड़ा ਆਪਾਂ कर चुके हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 8th क्वेश्चन। इन अ ग्रुप ऑफ 400 people, 250 can speak Hindi. Let H be a set of all those people who can speak Hindi. H be the set of all those people who can speak Hindi. Then number of elements in H. बेटा this is the notation of number of elements in H. कि H ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ elements ਹੈ ਉਹਦੀ notation ਹੈ NH. Then elements in H is 250 and there are 300 people who can speak English. There are 300 people who can speak English. The number of elements in E is 300. How many people can speak both Hindi and English? Then we have to find out H intersection E. Then we have to find out H intersection E. Beta 400 people can, there are total 400 people. It means H union E is 400. Number of elements in H union E is 400 and we have to find out this. बेटा ये फॉर्मूला तुसी याद रखना है। H यूनियन E ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਆਂ। number of elements in A union B is given by number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in intersection of these two sets, ठीक है बेटा। देखो this is A, this is B, A B, number of A union B करना बेटा ਆਪਾਂ ਆ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ? ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? किन्ने एलिमेंट्स होंगे? जिन्ने A च है वो भी सारे थे, जिन्ने B च है वो भी सारे। बट देखो बेटा इंटरसेक्शन इज काउंटिंग ट्वाइस, इंटरसेक्शन दो बार काउंट कर रहे हैं ਆਪਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਨ ਦਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਥੀਸ ਟੂ ਸੈਟਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਨ H plus number of elements in E minus number of elements in H intersection E. Number of elements in H 250, number of elements in E 300 and we have to find out this, let it be X and here is 400, ठीक है बेटा। 400 to 250 और 300 कितना बनेगा बेटा? 550। X इस साइड आऊगा 550 minus 400 and equals to 150। 150 people बेटा इतना देने जेड़े दोनों लैंग्वेज स्पीक कर सकते हैं, ओके बेटा। इससे तो बेटा बाद नाल ही पूछा हुआ है हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक ओनली हिंदी। बेटा हाउ मेनी ऑफ देम कैन स्पीक ओनली हिंदी। बेटा तुसी इत्थे कंफ्यूज नहीं होना। देखो ये 250 एलिमेंट्स, ये 250 पीपल ओ सी जेड़े हिंदी बोल सकते हैं, ठीक है। पर बेटा ये ओ बंदे नहीं सी जेड़े कल्ली हिंदी बोल सकते हैं, ये सीगा जेड़े हिंदी बोल सकते हैं। हिंदी बोलने वाले दे विच ये भी तो हो सकता है बेटा उन्हां विच कुछ बंदे इंग्लिश बोलना भी जानते होण, है ना। ते आपां ओ वाली गिनती करनी है जेड़ी कल्ली
बोल सकते हैं। आ मान लो अपने को हिंदी वाला सैट है, हिंदी बोलने वाले पीपल का सैट है, ये इंग्लिश, आ हिंदी बोलने वाले पीपल का सैट है, आ इंग्लिश बोलने वाले पीपल का सैट है, ते आपां आ वाला सैट करना है एच। एच मतलब आपां ये करना है बेटा, समझ आई मेरी गल। ते बेटा आपां की करांगे, पूरे एच विचों है ना की माइनस कर देंगे, इंटरसेक्शन वाला है ना, पूरे एच विचों एनएच कितना सी 250, 250 चों आपां की माइनस कर देंगे जेडे लोग दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं, वो किन्ने सी 150, 250 चों 150 गए, किन्ने आ गए बेटा 100। देयर आर 100 पीपल हु कैन स्पीक ओनली हिंदी। बेटा एनएच का मतलब ये सी हु कैन स्पीक हिंदी, बट वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी कैन स्पीक ओनली हिंदी। ओनली हिंदी ਲਈ बेटा ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਐਨਐਚ ਵਿੱਚੋਂ। ਐਨਐਚ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 250 ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 150 ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 250 ਚੋਂ 150 ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ 100 ਪੀਪਲ ਆਰ देयर हु कैन स्पीक ओनली हिंदी। ओके बेटा बच्चों 9th क्वेश्चन है, in a group of certain number of people 500 people like tea, 500 people like tea, let T is the set of all those people who like tea. The number of elements in T is 500 and 350 people like coffee. Number of elements in set C 350. 100 people like both. Number of elements in T intersection C is 100. बेटा जे टी पसंद करते ने 500, कॉफी पसंद करते ने 350 एंड जेडे दोनों चीज़ां पसंद करते ने वो 100 पीपल। How many of them like only coffee but not tea? Like only coffee but not tea. How many of them like only coffee but not tea? जेडे कॉफी तो पसंद करते हों but टी पसंद नहीं करते हों। ते बेटा कितना होगा देखो आप एक वेन डायग्राम बनाने आ, ओदे विच let it be T and let it be C. T intersection is given as 100. T intersection C 100. अपन को बेटा पता करना है C minus T. All those people who like coffee but not tea. तो बेटा C कितना C 350. These are total 350 people. Total 350 people out of which 100 like both. 100 people इदां दे ने जेडे टी भी पसंद करदे ने कॉफी भी। आपां नूं सिर्फ वो people करनी है जेडे कल्ली कॉफी पसंद करदे ने। ते किन्ने आ गए बेटा 350 minus 100 किन्ने बन गए 250। ठीक है बेटा 250 people are there who like only coffee. Okay बच्चों, now next part from the same question, how many people are there total? How many people are there? It means we have to find out C union T. किन्ने लोग ने total, then ਆਪਾਂ ਕੀ find out ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ union, number of element in C, number of element in T plus, ठीक है, number of element in C plus number of element in T minus number of element in T intersection C. Number of element in T 500, number of element in C 350 minus intersection कितना आया बेटा 350 है 500 850, 850 विचों 100 गए 750. There are 750 people in the group. Okay बेटा बच्चों इस तो बाद पावर सेट ਦੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ बेसिक चीज़ां बिल्कुल बेटा ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 1 2 3 4 5 6 7, let it be some elements, let this be some elements, then we have to tell 2 belongs to A, 3 does not belongs to A, 2 does not belongs to A, 8 belongs to A. Which option is true? This option is true because 2 belongs to A. This is the symbol of belongs to, 2 belongs to A. ठीक है बेटा बेटा वन मोर थिंग, इफ A यूनियन B इक्वल्स टू A, देखो बेटा A यूनियन B A के इक्वल है, A यूनियन B इज इक्वल टू A। बेटा A यूनियन B हुण आपां जे A यूनियन B करिए कितना होगा, ऑब्वियस है ਵੱਡੇ वाला सेट आऊगा ना, A ਦੇ एलिमेंट्स भी पाने हैं B ਦੇ भी पाने हैं। A ਤੇ B ਦੀ यूनियन ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ कितना आ रहा है A,
ਵੱਡੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸੈੱਟ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ a ਵੱਡਾ ਸੈੱਟ ਆ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ a ਯੂਨੀਅਨ b ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ a ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਦੋ ਸੈੱਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੋ ਸੈੱਟ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਸੈੱਟ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੈੱਟ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵੀ ਲਿਖਣੇ ਆ ਇਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵੀ ਲਿਖਣੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸੈਟਸ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਵਾਲਾ ਸੈੱਟ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ मतलब बेटा व्हाट ऑब्वियस है b इज द सबसेट ऑफ a क्योंकि बेटा जे b सबसेट ऑफ a होएगा ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬੇਟਾ ਉਹ a ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗਾ if b is the subset of a only then ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਜੂਕੇਟ ਐਪ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੈਟਸ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੈਟਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟਸ ਹੈ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਮ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਤੇ ਬੇਟਾ ਐਜੂਕੇਟ ਐਪ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਰਿਟਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ बेटा नाल दी नाल तुसी सारा चैप्टर रीड करना है ये वीडियो देख के बेटा तुसी सारे चैप्टर तो अच्छे तरीके नाल गो थ्रू होना है ताकि थानू इस चैप्टर दे विच कोई भी कमी ना रह जाए थानू इस चैप्टर दा हर एक क्वेश्चन आंदा होवे तुसी बेटा इस चैप्टर नू थोरोली रीड करना है इस तो बाद बेटा आपां नैक्सट चैप्टर करांगे कॉम्प्लैक्स नंबर्स वाला ठीक है कॉम्प्लैक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बेटा बट उदों तक तुसी इस चैप्टर नू वधिया अच्छे तरीके नाल रीड कर लेना है ताकि थोड़ा सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए ओके थैंक यू बेटा।